हेलो भाई लोग, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेड रेगनार MP15 और ये पर्टिकुलर वीडियो इज़ गोइंग टू गो ऑनलाइन ऑन द डे 5 of my Spiti ride, the ride that I've been calling the redemption ride. For the reasons you know, if you've been to my channel, you'll get to know why I call it the redemption ride. So this day we started from Chitkul and planned to go to Kaza, but due to some problems that we faced on the way back to Kaza, uh, like losing a phone, that that a person that was traveling with me, Sharma ji, lost his phone, which was later on found by some good person, and he told that where to go and get the phone back. तो वो गए वहाँ पे, उन्होंने अपना फ़ोन वापस लिया, उसकी वजह से थोड़ा एक दिन का और डिले हुआ। और कुछ ऐसा रहा है कि मेरी जो 2023 की स्पीति की राइड थी, उस राइड में जिस जगह पर मैं रुका हुआ था वो सेम जगह मुझे मिली। जब हमने सोचा कि थोड़ी देर रुकते हैं तो वो सेम जगह हमें वहाँ पे मिली। एंड देन इट वाज आल्सो गेटिंग कोल्ड, द टेम्परेचर वाज अराउंड लाइक इन सिंगल डिजिट, समवेयर अराउंड 5 to 4 डिग्रीज। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम उसी जगह पे फिर नाइट स्टे करेंगे। तो हमने फिर नाको में स्टे किया, जिसका सारा की सारा डिस्क्रिप्शन कि हमने कहाँ स्टे किया था और कैसी वो जगह थी, उस जगह का क्या नाम था, और उस जगह के साथ मेरा पर्सनली पुराना क्या कनेक्शन था, आप इस वीडियो में देखेंगे। और दिस वीडियो में जो भी आपको सही लगे, इस वीडियो में ऐसी सिचुएशन रही कि रास्ते भर पानी का बड़ा प्रॉब्लम रहा, कहीं पानी गिर रहा था, कहीं रुक रहा था, और टाइम क्रंच भी था क्योंकि हम एक दिन पीछे चल रहे थे अपने शेड्यूल से। तो कुछ सिचुएशन ये बनी कि माइक मैं नहीं लगा पा रहा था बार बार अपना, क्योंकि जब मैं गोप्रो को उसके मॉड में लगाता हूँ और माइक अलग से जब उसमें अटैच करते हैं तो वो वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है। पिछले वीडियोज में भी मैंने इसके बारे में चर्चा करी है कि वो वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है, तो कई जगहों पर माइक अलग करना पड़ रहा था और इसलिए मैं बार बार माइक यूज़ नहीं कर रहा था। बट हाँ, इस वीडियो में मैंने कुछ नया ट्राई किया था इस दिन पे, जब मुझे याद आया कि हाँ यार, ये भी किया जा सकता है। तो मैंने अपने इसी गोप्रो को अलग अलग एंगल्स पे सेट किया और अलग अलग एंगल्स से उसमें फुटेजेस निकाले हुए थे। मुझे ये आइडियाज़ कहाँ से आए? काफ़ी समय से, लगभग साल भर से मैं फॉलो कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग टेल्स। क्षितिज जी का चैनल है वो, और मुझे पसंद आता है उनका राइडिंग स्टाइल और उनकी बातें, और जो वो बताते हैं सारी चीज़ें, हाउ टू कैप्चर गुड इमेजेस एंड हाउ टू यूज़ योर कैमराज। तो सॉरी, मैंने नाम गलत बताया उनका। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है मोटर बाइक टेल्स। मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा और हो सकता है मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा उस चीज़ के लिए आपको। तो मैं रेगुलर बेसिस पे उनको फॉलो करता हूँ, और उन्होंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी हाउ टू यूज़ द कैमरा फॉर अ गुड मोटो व्लॉगिंग, तो कोशिश मैंने वही करी है। तो आप एंजॉय करिए इस वीडियो को, और हो सके अगर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपके पास कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हो कि कैसे मैं इन वीडियोस को या अपने इस चैनल को बेटर बना सकता हूँ, तो योर सजेशंस आर वेरी वेलकम। So please stay tuned with me and support me. Thanks a lot. Enjoy the video.
No, not now. But it is expected to rain like 7:30, 8 o'clock, according to the map. Right now it's not raining. I hope you can see these two vultures. I haven't seen them in a long time. बहुत समय बाद देखा मैंने भी. इस वजह से रास्ते में रुक करके I'm trying to look at them. देखिए.